You don't want to go to parlors for your regular facials and cleanup? Come watch my video, which is about my Sunday skincare routine, which gives me very healthy and glowing skin. And I do it completely under budget. So come watch the products that I use and the complete drill I go through. And subscribe me before you watch the whole video. Welcome back to my channel, and for those who are new here, hi, I'm Kimsey. So today is Sunday and we are back with Sunday ranting. But today it's not just Sunday ranting, it's going to be my weekly skincare routine along with everything. So let's start. Thor is also with us today. And after doing all the makeup videos whole week, applying a lot of makeup the whole week, I think एक weekly skincare routine होना चाहिए. I do not usually go to all the parlors and get my skin cleanup done. So today we are doing the cleanup at home, which will give you very good bright skin. So let's start. Okay. Skincare doesn't only mean putting a good toner, moisturizing and everything. You need to clean this whole thing weekly as well. So आज we'll be doing scrubbing and we'll be applying a face pack today. And उसके बाद we'll be applying a good sheet mask and we'll be working on our blackheads too if there is any. Because ये regularly remove करना is also very good for the health of your skin. So let's start. सबसे पहले you have to wash your face, and I do wash my face with this Modicare Shloka, which is a purifying neem face wash. तो ये regular days में I use. तो अभी मैंने already face wash कर लिया है, and this is the product I used. So let's get on the other step, which is going to be scrubbing. Face wash we are going to scrub, and this scrub is again my Modicare Shloka. So this is Moroccan Argan Oil Scrub. ये भी मैंने बहुत समय से use कर रखा है. This has been a part of my whole skincare journey. So let's start by using the scrub first, and then we'll continue talking. So let's take it on your hands. So ये थोड़ा greeny है. प्लीज स्क्रब को बहुत ज्यादा ओवरडू मत करो, क्योंकि पीपल यूज स्क्रब थिंकिंग कि ये सारा आपका सब कुछ क्लीन हो जाएगा, स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी. ऑब्वियसली स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, बट ओवर स्क्रबिंग इज ऑल्सो अ थिंग, क्योंकि अगर आप ओवर स्क्रब करोगे तो वो स्क्रैचेस भी छोड़ देते हैं और वो आपकी स्किन डैमेज करते हैं. सो राइट अमाउंट ऑफ स्क्रब and right amount of massage equally is important. So take care of that. So let's apply. And you have to take a water along with this and you have to start applying. ये देखो ये ऐसे greeny है ये पूरा. So let's do this and avoid your eyes. Use a lot of water and avoid all the eyes, all your eyes वाला area, and massage it for 5 minutes in circular motion. Let's take some water. I look like a boot. Half the videos I look like a boot. Okay. So मैंने आज का दिन इसलिए चूज करा क्योंकि मेरे बाल आर ऑलरेडी वेरी ऑयली एंड मैं पार्लर्स नहीं जा सकती क्लीन अप करवाने. आई लाइक डूइंग इट माई सेल्फ. सो एंड थॉर इज अगेन हियर. So I do it myself. It's like a very lengthy process, but you will see the results after the video. Because the results are going to be amazing. It will shock you how clean skin you will get at the end, how relaxed, deep pumped skin you will get at the end. So massage it for 5 minutes. Massage in circular motions like this. And all these areas very properly. Use a lot of water and wash it off. Let me do that and I'll be back. So I have washed off my scrub. You can see how clean the skin looks. Obviously, let's say कि हाँ हमेशा आपके blemishes होते हैं, आपके कुछ scars होते हैं, क्योंकि आप obviously बहुत makeup use करते हो. So this is just natural and obviously ये सब overnight नहीं जाते. This take a lot of time, but ये करना regularly बहुत जरूरी है. And with scrub you can see how soft my skin looks. It already feels very refreshing. So, okay.
So next thing we are doing is we are working on our blackheads. You do not realize, you always think कि blackheads whiteheads नहीं होंगे, but usually आपको dirt से हो ही जाते हैं. So the one that I am doing is by Sanfe, which is deep purifying nose strips. So I'll be applying it and see कि अगर मुझे blackheads हैं. So this is how it comes. It has 6 in this pack, I guess. This is for 169, but मुझे इससे कमी का मिला होगा. So it has 6 in this and I am using one of those. This is how it looks. We are going to apply it, controversial area, we are going to apply it this way, okay? And what we need to do is we need to wet our nose very properly. So let's wet our nose. बहुत अच्छे से वेट करना, नहीं तो वो स्टिक नहीं होगा, वो रिमूव हो जाएगा. एंड यू नीड टू मेक श्योर कि सारे ब्लैकहेड्स बाहर आ जाएं. ओके, सो लेट्स वेट आवर नोज. आई नो मैं ये बहुत ही बेसिक चीजें दिखा रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी रॉ, जिससे इट हेल्प्स एवरीबडी आउट देयर जो इस चीज में गाइडेंस चाहते हैं. ओके, so I have applied this nose strip. You need to keep it for another 15 minutes. स्किन केयर बहुत टाइम लेता है, इसलिए ये मेरा संडे का रूटीन है जिससे आप आराम से करो. यू हैव ऑल द टाइम इन योर हैंड्स. सो आई हैव अप्लाइड इट. आई हैव टू लीव इट फॉर 15 मिनट्स एंड जैसे जैसे ये ड्राई होने लग जाता है ये हार्ड होने लग जाएगा. सो डू नॉट वरी अबाउट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इससे आपके सारे ब्लैकहेड्स जो इस पूरे एरिया में है वो सारे रिमूव हो जाएंगे. एंड वन मोर थिंग, जैसे पीपल डू रिमूव देयर फेशियल हेयर एज वेल. मैं ये चीज नहीं करती क्योंकि आई एम वेरी स्कैर्ड. आई हैव सेंसिटिव स्किन, तो आई गेट वेरी स्कैर्ड कि व्हाट इफ आई रिमूव दिस हेयर एंड आई विल गेट ऑल पिंपल्स, क्योंकि दिस इज व्हाट माय मॉम डज, बट शी ऑलवेज सफर्स विद अ लॉट ऑफ पिंपल्स. सो मुझे बहुत डर लगता है उनको देख के, तो मैंने आज तक कभी ये रिमूव नहीं करा, जिसकी वजह से मेरे मेकअप पे भी इम्पैक्ट आता है. क्योंकि मेकअप जो बिना हेयर के सेट होता है, फेशियल हेयर के सेट होता है, दैट इज वेरी ब्यूटिफुली ब्लेंडेड, बट with your facial hair it does create a lot of problem. I don't know मेरे अंदर कभी हिम्मत होगी कि नहीं to remove all the facial hair, but I'll definitely give it a try maybe once, but मुझे नहीं लगता अभी हिम्मत है मेरे अंदर. So मेरे पूरे इस रूटीन में facial hair removal नहीं है. I'm sorry, but anybody who wants to do it they can do it. It's according to you, so you should do it if you want to. Baki, here is my coffee and I am just waiting it for to dry, and I'll meet you after 15 minutes so that it's dry. और मुझे हो गया 15 मिनट. Let's remove this. ये देखो ये कितना टाइट हो गया है. So this is supposed to be very tight. अगर ये आपको बहुत ज्यादा खिंचा हुआ लगे तो do not feel odd, क्योंकि this is normal. ये ऐसे ही फील होता है. So let's remove this. थॉर को भी करना है पूरा स्किन केयर. So let's remove this. ये थोड़ा सा हर्ट करेगा क्योंकि फेशियल हेयर है. So let's remove this. So this is going to hurt a bit, but ये easily remove. Okay. Oh, it does feel soft. I have tears in my eyes. ये होता है हर बार. Sorry. Okay. So okay, fine. So this is how the nose strip looks. I will show you up close क्योंकि I do not have blackheads, but I did have some ingrown hair and some whiteheads. But थोड़ी लाल है, but it feels good. So we are done with this as well. So next, we are going to go with a face pack. अपने आंसू पोंछ के आते हैं next step पर, which is a face pack. So the face pack I am using is by Foxtail Skin Radiance Mask. It clears pores, reduces blackheads, improves skin clarity and it also tones. ये मैं बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, बट इसका जो स्पैचुला आया था, this is how it looks, बहुत सूदिंग है. I lost the spatula, so hot. So let's apply this. It's very beautifully smelly. It's actually smelly, but ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है इसका.
so it is completely good. So let's apply a very thin layer of it on your face. ये क्ले मास्क है। और दूसरा एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मास्क का, विच इज जब आप इसको लगाते हो और ये ड्राई अप होता है। सो यूजुअली मास्क आपको बहुत वैसी फीलिंग देते हैं जिसके अंदर आपकी स्किन खिंची हुई लगती है। इसमें आपकी स्किन वोंट फील खिंची हुई एट ऑल, रादर ये बहुत जेली वाला फील देता है। मतलब आई डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट फीलिंग, बट इट डज गिव यू अ वेरी जेली वाला फील। एंड ये वीकली तो एक बार यूज होता ही है, क्योंकि दूसरा आई यूज इज नीम रोजमेरी विच इज बाय मोदी केयर। आई हैव शोन अनदर वीडियो ऑफ दैट। दैट आल्सो रिमूव्स लॉट ऑफ ऑयल एंड यार बहुत ग्रोस तरीके से लगा रही हूँ मैं, बट सॉरी, बेयर विद मी। आपको पता है कि बिहाइंड द कैमरा स्किन केयर ऐसा ही लगता है। एंड I recently decided that I want to be very raw in front of the camera because it's better that way. I think जितना क्लियरिटी से मैं बता सकती हूँ चीज़ें, उतनी ही क्लियरिटी से बताना चाहती हूँ। No filters. It's better to showcase the natural skin, nothing involved, क्योंकि यही skin texture होता है। That is the reality. So आज का Sunday rant is actually about skin positivity. Doesn't matter कि what color you are, कितने faces पे आपके blemishes हैं, it's just skin. So we have completely applied this mask now. We have applied the whole mask now. We need to wait for another 15 minutes. Let's wait for 15 minutes and I will come back. So my pack has been here for 15 minutes और ये बहुत soft है, ये बिल्कुल भी stretch नहीं हो रहा, देखो कोई भी lines नहीं है। So अब I am going to wash it off and let me show you my face after this, क्योंकि ये पैक मेरे को बहुत अच्छा लगता है। It's very refreshing. जिसने भी ये Foxtail के पैक को ट्राई नहीं करा है, प्लीज ट्राई करो। It's my personal recommendation. Let me go wash my face and come back quickly. I washed off my face after the pack and I feel very refreshed, क्योंकि बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है ये पैक बाद में। एंड हाँ, दूसरा कभी भी टॉवल ड्रैग मत करना अपने फेस पे, आपका बर्तन नहीं है। यूज इट वेरी प्रॉपर्ली, इधर डैब इट और बहुत लाइटली पैड करना है स्किन। ओके, सो दिस इज माई स्किन नाउ। आई फील एब्सोल्युटली रिफ्रेश्ड, बट मेरी ड्रिल यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आई डू अप्लाई अ शीट मास्क, सो लेट्स अप्लाई शीट मास्क विद मी. So the one that I'm using is by Miniso, which is superfood facial mask. It's broccoli and it helps your skin from UV damage and it deeply moisturizes the skin and leaves it looking subtle and radiant. So let's go on with the sheet mask as well and complete the trick. I have taken off the sheet mask and let's open it. यार बहुत लोग ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये शीट मास्क कट भी कर लेते हैं। सो इफ यू वांट आप अपने शेप के हिसाब से इसको कट कर सकते हैं एंड ये परफेक्टली आपका शेप ले लेता है। सो लेट्स अप्लाई दिस एंड इट स्मेल्स अमेजिंग एंड इट गिव्स यू वेरी कूलिंग इफेक्ट। बहुत प्रॉपर्ली इसको लगा के अपने को 15 मिनट्स let it sit inside your skin for another 15 minutes. And the best thing is इसमें बहुत सीरम होता है and what we can do is कि हम इसके सीरम से बहुत अच्छा मसाज भी कर सकते हैं। Also, this sheet mask costed me 60 rupees from Miniso. Miniso does have very good skincare products. तो अगर आपकी स्किन पे सूट कर रहा है तो why not? मुझे Miniso की चीजें अच्छी लगती हैं, so I do use sometimes. and आपने देखा है मेरे और वीडियोस में, it's already there. So let's sit with it for another 15 minutes and I will be back. हो गए 15 minutes. Now let's remove this.
हाँ, it feels good. अब इसका जो serum है that is actually very beneficial. आप इसको थोड़ा सा मसाज करो. लोकित और मेरी जिंदगी में हमेशा आसपास घूमते रहेंगे. यूजुअली आपके पैक्स में भी बहुत ज्यादा सेरम होता है. डू नॉट वेस्ट इट. लाइक देयर इज ऑलवेज सम serum inside your pack, so always apply that and massage it for a few minutes. It's actually very good. So we have massaged our face. Now we are coming down to the last step of this whole routine to give you a good glowing skin and a good healthy skin. This is for your healthy skin. So let's come down to the last one, which is applying a eye patch. So let's do that. The last thing that we are using is McCafe's Coffee Hydrogel Under Eye Gel. This helps in reducing dark circles and it also gives you a hydration boost. It has hyaluronic acid and caffeine. So this is the box. Let's get into it. So सबसे पहले you will get this spatula. ठीक है? And okay. So this is how the box looks. Oh shit, serum गिर गया इसका, which is the most important part actually. तो make sure मेरी वाली गलती मत repeat करना. I will take it with my hands only. Let's do this. Okay. Serum ना गिर जाए. Okay. So we are applying it here, and we'll take the other one. बहुत स्टिकी है, प्लीज आराम से यूज करना. मेक श्योर दिस डजंट फॉल ऑफ एंड जस्ट लीव इट फॉर अनदर 15 minutes. दिस इज ऑल्सो अ गुड पार्ट एंड इट्स स्लाइडिंग. आई एम सॉरी, दिस इज स्लाइडिंग एंड दिस इज माई लास्ट स्टेप. दिस इज व्हाट आई डू एंड ओ मां कैसे कंप्लीट किया जाए. ऊपर देखो, ऊपर देखो. This is what I do. ऊपर देखो. I haven't made a video with this before, so this is actually a very tricky part for me. But संभालना पड़ता है. ये तो नीचे ही आ गया तो. हाँ, मेरे struggles आप लोग भी देखो. So just leave it on for 15 minutes. In fact, आप ये रोज भी अप्लाई कर सकते हो. Every morning you wake up, this will deep up your eyes. तो आप रोज सुबह उठ के इसको अपने आईज के नीचे लगाओ and you can take it off. I think this will be my last step. Just take it off and massage it with the serum that is left behind this. And उसके बाद what I do after that is I just apply my own toner, moisturizer, serum, a lip balm, and I am done. So this is my complete routine to give me a good skin every week. I hope that you bared with me in this whole struggle of my Sunday skincare routine. I hope this helped you at all, and I will be back after 15 minutes again so that I can show you once I remove this off. We are back after 15 minutes. Let's remove this. काफी हद तक ये पूरा ड्राई हो चुका है. We are removing this, and this was the last step. Just massage it off. Okay, and this is how, if you want, you can massage it even for a long time. And my hair are oily, you can see that. But yeah, my Sunday routine is done. I feel very refreshed. This is my skin after everything that I've done. It does give a lot of glow. I do feel कि मेरी skin अब healthy है. It's very soft. It's done for the week. अब आप normal skin care रोज करो, and next Sunday continue with the drill. So आज का purpose of this video was that there are a lot of people जो हमेशा facials और clean up करवाने parlors में चले जाते हैं. But I do not like that. I do not prefer going to a parlor.
So मैं अपना घर पे ही पूरा करती हूँ and a lot of people are also confused कि करना क्या क्या है, कैसे है. So मैं अब ये पूरा page, this whole channel, I will take it from the scratch. I will be serving all the basic problems that everybody has. So मेरे हिसाब से ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम है कि अपनी स्किन की हेल्थ कैसे मेंटेन रखें. So this was my whole drill. Now I am going to take a shower to remove all this oil from my head, and I will meet you in the next video. आज हवा बहुत अच्छी चल रही है by the way. So I will meet you in the next video. Do send me more ideas if you want on a regular basis, because that is what I want to focus on. I want to grow my page with a lot of people who are beginners, who want to learn new things, and who are concerned about their health, concerned about their skin and makeup. I will be your one-stop guy to suggest you everything. And that's it. Today there was no other ranting, and I will meet you until next time. Bye bye, take care. But if you like the content, please subscribe me so that you get to watch more exciting content. Do like and comment if I missed on something, or if you want something else for me to experiment on. Otherwise, until then, bye bye.